at AI in Viksit Bharat and in digital growth and where we are going ahead? Thank you, Dr. Tina. Am I audible? Okay. So good afternoon to everyone. And I would be thankful to the BBD for inviting me on this occasion of Punyatithi of Sri Swargya Akhilesh Das ji. And it's honor to be here. And since morning you have heard about AI and AI innovation and digital application of the AI. So within that same framework, I will not repeat the things. I will add on that AI because every time we are sitting with AI applications. So everyone is using this phone, even in the WhatsApp Llama is there and you are using the chatting and all. So Google is no more, you are not using most of the time Google for the searching. Even WhatsApps are sufficient to search and get all the information. Even in the Twitter, Grok is there and use it. What I would like to add for the students, now what Professor Misra said that impatience are increasing. All the students want quick solution, either sitting in the classroom, whatever the teacher are discussing, you have a solution on YouTube, Grok, WhatsApp, Llama, and you are judging. But the point is informations are available in this era with you. How to use those information with AI and so much things to solve the real life problems. Ample problems, what professor mentioned that for ticketing, what the last generation did, you all sitting right now in this hall able to book the ticket. That's okay. That ease is available, so you want everything on the fingertips. You want to solve everything on just in a second. Not going to happen in the real life. Maybe artificial life you can. In real life, patience is the key. And you have to learn that. You have to learn the patience. And so you have this tool AI with you. You all have to learn how to use those AI as a tool to solve the real life problem. Most of the students, I am guessing maybe wrong, it's from the UP I am expecting. You have to see the real problems, being sitting in the Lucknow, being sitting and seeing the real problems in the cities in the Lucknow, Uttar Pradesh or your native place. There are problems. But you all are engineers, and engineer's job is to be a problem solver, not to be a problem creator. So this era where you are, you have all the information, YouTube to AI tools, but how to solve the real problems which can serve your family, your society, your city, your state, and then your country. So it's a real challenge, and AI is there to help you all. You have to use, you have to do the hard work. You all are doing prompt engineering. This is also a challenging task. What should be asked with AI prompt so that Llama and large language model you can use it. So you have to be hard-working persons. What 20 years before people are doing, okay, that thing you can do on the fingertips, but the other challenges are with you. You have to be a problem solver, what I would like to add, and then in the discussion I will add more things where and how to solve the problems. But keep in mind, being an engineer, don't blame or claim anyone that this is the problem in this institutions or in your family or in your society. Being an engineer, the first role is to solve the problem, not to blame or someone else. So be a problem solver. You have to learn how to use this AI to solve the problems. Now language is no more the barrier. Speaking Hindi, Bengali, other language, English, okay, Google will translate quickly. So you cannot say I am unable to speak English, no problem. But you have to learn how to speak even in Hindi. That you cannot say I cannot do that. So in one language you have to do, other AI will help. So how the AI will help yourself to improve your day-to-day activity, your personality, your problem-solving attitude. That's all are very, very important, and very, very good things are available with you all in this era. So with this, I would like to stop, and we will take the questions, and in the discussion, AI application, I would like to discuss. Thank you. Yeah, so thank you so much, sir.
considering your point regarding we have to be a problem solver. So I could recall that there is a meme going around, like I have gone through that. We researchers always first create a problem and then we try to find a solution of it. But actually, the real scenario is that the problem was already there. We did not realize. And now we are realizing it, we are trying to find the solution. So keeping in mind the theme of this panel discussion for AI innovations for sustainable development, so I would like to put forth one point to Professor R.K. Mishra, and I would request him to enlighten us that how artificial intelligence he would like to portray to our audience for urban application in agriculture or any other field that is not yet explored or that are being explored. So, I would request you to please repeat your So suggestion. What I am to do. considering the theme of this panel discussion regarding AI innovations for Sustainable sustainable development, so I'm curious that if you would like to put forth some insights and some pointers that how artificial intelligence is being used for urban areas for its development, and how it is still unexplored and how it is being explored. So, I hope everyone understands Hindi. Anyone who doesn't understand Hindi, please raise your hands. So, no. So, if someone is there who doesn't understand Hindi, their neighbors would help them. So, I would continue in Hindi. तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके टीचर्स तो आपसे बात करते रहते हैं और मैंने भी सब टीचर से ही सीखा है, लेकिन आप लोगों से बात करने का मौका बहुत कम मिलता है। अभी सर ने जो बात की उसके ही कंटिन्यूएशन में मैं कहना चाहूँगा कि पहले हम ये जान लें कि इंजीनियरिंग है क्या, इन जनरल इंजीनियरिंग क्या है। आप चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे मैकेनिकल पढ़ रहे हो, आप में से बहुतों ने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा होगा। तो अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग को देखें, अपनी स्ट्रीम को या दूसरे डिसिप्लिन्स को देखें, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि इंजीनियर का रोल है कि वो पहले प्रॉब्लम को स्टडी करे। किसी ने बोला है कि अगर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो आधा सोल्यूशन आपको मिल जाता है। हम प्रॉब्लम को बहुत सुपरफिशियली देखते हैं, अगर हम उसको थोड़ा स्टडी कर ले तो हमें समझ में आ जाता है कि असली कोर प्रॉब्लम कहाँ है। और एज एन इंजीनियर जो आपकी लैंग्वेज है इन जनरल वो है फॉर्मुलेशन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिजनेस हो रहा है, उसमें कुछ गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि सीरियल आता है, चीज़ें बनती हैं और उसके बाद वो बिकती है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वर्बल डिस्क्रिप्शन है। आप किसी इंडस्ट्री से पूछिए तो आपको ये वर्बली बताएगा। मैं जब कहना चाह रहा हूँ फॉर्मुलेशन, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको मैथमेटिकली लिखिए कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। हम प्रॉफिट को के लिए अगर एक फंक्शन बनाते हैं तो उसमें कितने वेरिएबल्स आते हैं, अगर हम कॉस्ट के लिए फंक्शन बनाते हैं तो कितने वेरिएबल्स आते हैं, अगर हम प्राइसिंग करने जा रहे हैं तो उसमें कितने वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल से मतलब है कि जैसे कि रॉ मटेरियल है, जो हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं वो है। तो हम जो फॉर्मुलेशन कर लेते हैं तब ऐसा फॉर्म मिलता है जिसको कि हम अब सॉल्व करने पे जा सकते हैं। तो इंजीनियर्स का पहला काम है फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मुलेशन। उसके बाद ही हम ये समझ सकते हैं कि उसके लिए टूल कौन सा अप्रोप्रिएट होगा उस फॉर्मुलेशन को जो हमने किया है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने एक फंक्शन बना लिया कि 10 वेरिएबल है, उस पर ये कॉस्ट डिपेंड करती है मान लीजिए। अब वो कॉस्ट की फंक्शन मिल गई, अब हमें उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है जितना मिनिमम हो सके। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल जीरो हो जाए,
या आप चलिए प्रॉफिट को ले लेते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को पूरी तरह मैक्सिमाइज नहीं कर सकती, जो हमारी मर्जी वो कर, उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं। फिर हमें कॉन्स्ट्रेंट्स देखने होंगे, उन कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, हमारी जो प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करेंगे। अब इशू आता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड्स क्या क्या है। आजकल मैं फिर से बोलूंगा कि हम इतने इम्पेशेंट हो गए या इतने केयरलेस हो गए कि हर चीज में AI ML लगाना चाहते। मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मुझे प्रोजेक्ट करना है AI ML में, तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले सर प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे, या आप प्रॉब्लम बता दीजिए, मुझे AI ML करना है। आपने सुना होगा कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। अब जहां पे हमें सिलाई करने के लिए सुई चाहिए, वहां पे हम तलवार लेके बैठे, नहीं मैं तलवार से ही काम करूंगा, मैं सुई से काम नहीं करूंगा, मुझे आप तलवार वाला ही प्रॉब्लम दीजिए। तो अभी सर ने जो बोला कि हमें प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए अपने सराउंडिंग्स में, हम अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो उसको फॉर्मुलेट करें, फॉर्मुलेट करके उसको देखें कि उसका फॉर्म क्या आ रहा है, और उसके लिए सोल्यूशन मेथड, मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन मेथड क्या होगा। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब आप एक प्रॉपर इंजीनियर हैं। और अगर आप कहते हैं कि प्रॉब्लम कोई भी हो हम AI ML ही करेंगे, तो फिर कहीं पर कमी रह गई है हमारे समझने में एज ए टीचर, और आपके हमारे समझाने में और आपके समझने में। तो अब आते हैं जो मैडम ने बोला कि अर्बन सिनेरियो में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें कहाँ पर AI एप्लीकेशन हो सकता है। मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम्स की स्टडी करें। जैसे आजकल एक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय है, आपके BBD के सामने ही शाम को ट्रैफिक लग जाता है, बहुत बड़ा ट्रैफिक लगता है, मैं अक्सर इस रूट से जाता हूं, और हम लोग उसके शिकार होते हैं। और हम लोग उस पर सोचे, पहले समझे कि वो ट्रैफिक, वही बात है फॉर्मुलेशन की, पहले देखा जाए ट्रैफिक के वेरिएबल्स क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर ट्रैफिक को अगर हम मॉडल कर लेते हैं, तो ट्रैफिक को अगर हमने मॉडल कर लिया तब हम सॉल्यूशन पर जा सकते हैं। फिर हमें देखना होगा सॉल्यूशन में। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनमें मोस्टली AI ML टूल्स ही काम करते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टेप पर हमें हेल्प करते हैं कन्वेंशनल मेथड्स, जो AI या मशीन लर्निंग बेस्ड नहीं है, या जो बेसिक है, जैसे कि मान लीजिए कि इवन ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं जिनको कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, या स्वार मतलब पॉपुलेशन बेस्ड बोलते हैं, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम्स को देखें और उसको समझें और उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें। फिर आप सारे इतने पोटेंशियल वाले हैं कि उसको लग करके ये देख लेंगे कि सोल्यूशन क्या है। अच्छा, सोल्यूशन हमेशा इंजीनियरिंग सोल्यूशन वो ज़रूरी नहीं, वो सोशल भी हो सकता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें करने की, अवेयरनेस बेस्ड भी हो सकता है, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड भी हो सकता है कि हम उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उनको अवेयर बनाएं। कहीं पर हम ये मैसेज डालें कि आप जब यहाँ पर भीड़ हो रही है तो ओवरटेक ना करें। जैसे आप कभी रेलवे क्रॉसिंग पे जाइए तो आप ये पाएंगे कि अगर आप लेफ्ट लेन में हैं तो जितने भी लेफ्ट लेन में वो पीछे पीछे लाइन नहीं लगाते, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने लेफ्ट है, क्रॉसिंग बंद है, थोड़ा सा राइट आएंगे, फिर उनके पीछे वाला थोड़ा सा और राइट आएगा। बिल्कुल क्रॉसिंग पे आप पाएंगे कि इधर लेफ्ट लेन वाले भी राइट में है और उधर वाले जो हमारे राइट है वो भी लेफ्ट में आ गए। और अगर ऐसा ना होता, अगर वो अपनी लाइन में होते, क्रॉसिंग खुलती है, आप लेफ्ट लेन में सीधा चलते जाइए, राइट वाला सीधा चलते जाए, कोई जाम नहीं होगा, लेकिन वहां पर जाम हो जाता। अब इसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आप क्या करें? इट्स सिंपली मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग मीन्स योर ओन ड्यूटी, और उसके लिए नियम हम ही लोगों ने बनाए। कोई आसमान से नियम नहीं आया कि बाएं चलिए, ये हम ही लोगों ने बनाया और हम ही नहीं फॉलो करते हैं। इसके सोल्यूशन सोशल होंगे, इसके सॉल्यूशंस हमें उस तरह करने होंगे। तो अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ट्रैफिक किस समय हो रही है, और ट्रैफिक मैंने कई क्रॉस उसमें देखा है, फ्लाईओवर्स में दो फ्लाईओवर्स मिल रहे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में फ्लाईओवर्स उतर के नहीं जाएंगे, जहां फ्लाईओवर मिल रहे हैं वहीं पर रुक करके और टर्न लेने लगते हैं, और उसके कारण पीछे के ट्रैफिक रुक जाते हैं।
तो उसमें हमें देखना पड़े, और अगर आप उसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप एनसीसी से जुड़े हैं या किसी कोई ग्रुप आपने बना रखा है, उसको आगे बढ़ के अवेयरनेस पे भी जाना पड़ेगा। हाँ, एआई सॉल्यूशंस भी है या इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी है, और उसमें आपकी ट्रेनिंग भी है, आप उसको समझ सकते हैं। और अगर आप एआई की ट्रेनिंग में जाते हैं, मतलब एआई के सॉल्यूशन बनाने में जाते हैं, तब आप ये देख पाएंगे कि एआई की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है। तो अभी हमें डिजाइनर होने की जरूरत है। जब आप यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं तो ठीक है, एज ए जनरल सिटीजन आप यूजर बनिए, लेकिन एज एन इंजीनियर आपको एक डिजाइनर बनना पड़ेगा। और जब आप एक डिजाइनर बनेंगे तो आपको मेथड समझने पड़ेंगे कि ये सॉल्यूशन के लिए हमें क्या मेथड्स अप्लाई करना है, आपको उसको गहराई से समझना होगा, और तब आप कुछ बना पाएंगे, कोई एआई सॉल्यूशन बना पाएंगे। जब एआई सॉल्यूशन बना पाएंगे तो आप समझेंगे कि एआई की प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे मैंने हमारी बल्कि हमारी लड़की ने, वो 9th 10th में थी इस बार, उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें 3 कमोडिटीज थी और उन पर जीएसटी के रेट्स दिए हुए थे, और जीएसटी के रेट कैलकुलेट करके उनका जीएसटी के बाद जो प्राइस आ रही वो बताना था, और टोटल करके बताना था प्राइस क्या होती है। पहली कमोडिटी में परसेंटेज में जीएसटी दिया है, दूसरी कमोडिटी में एब्सोल्यूट में दिया है, तीसरी कमोडिटी पे परसेंटेज दिया है। उसने तीनों को परसेंटेज मान लिया और कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद टोटल किया और वो आंसर नहीं मैच कर रहा है। अब वो भी इम्पेशेंट है, ये नहीं कि उसको क्रॉस चेक करे। हम लोग हमेशा सिखाते हैं क्रॉस चेक करिए, खुद देखिए, नहीं, उसने सीधे चैट जीपीटी में डाला। उसने बोला ये प्रॉब्लम है मेरा ये सोल्यूशन आ रहा है, क्या सोल्यूशन सही है? चैट जीपीटी ने सारे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किए और बाद में बोलता है सही है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट रखवाया है, मैं यहाँ लाया नहीं हूँ। और उसने क्या किया, जो दूसरा वाला कमोडिटी था जिसमें उसने उसको एब्सोल्यूट को परसेंटेज मान के किया, वही चैट जीपीटी ने किया, और वही 3 फिगर्स आए और उन तीनों फिगर का सम उसने वही किया। फिर उसने एक तरीका और ट्राई किया, फिर से दिया, तो उसने क्या किया, तीनों स्टेप सही कैलकुलेट किए, एब्सोल्यूट जीएसटी को एब्सोल्यूट लिया, लेकिन टोटल में वो आंसर दिया जो इसका था। मतलब 3 नंबर का वो टोटल कर रहा है और करेक्ट टोटल नहीं दे रहा है। अब ये प्रॉब्लम कहां से आ रही? किसी बच्चे ने जरूर गलती की है कहीं पे। तो उसने उससे पूछा, बच्चे ने, हमारी लड़की ने, कि ये जो 3 ये फिगर्स हैं इनका सम आप बोल रहे ये होगा, क्या ये होगा? तो बोलता नहीं ये नहीं होगा। फिर उसने सम किया और बोलता है ये होगा। तो उसने बोला हाउ टू ट्रस्ट यू? तो बोलता है हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा। अब आप सोचिए कि वो उठा कहां से रहा है डेटा, जो जिस पर वो अपने बिल्ड कर रहा है आंसर। कहीं मिस्टेक हुई है, उसने भी वही गड़बड़ की है। वो 3 फिगर्स उठा रहा है लेकिन टोटल नहीं कर रहा है, वो सीधा जो कहीं पड़ा हुआ उठा के दे रहा है। अभी आप बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स उसको दीजिए, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी आप दे दीजिए। हम डिजाइनर बनेंगे तो हम समझेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड दिस विल मेक यू रिस्पॉन्सिबल यूजर ऑफ एआई एंड मींस प्रॉपर यूजर ऑफ एआई, ब्लाइंड यूजर नहीं, अवेयर, वेल अवेयर यूजर ऑफ एआई। इसकी भी जरूरत है, और तब आप दूसरों को अवेयर कर पाएंगे। अगर आप खुद अवेयर नहीं रहेंगे तो दूसरों को अवेयर नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी पड़ी हैं, बट मुझे तो मेजर प्रॉब्लम ट्रैफिक की लगती है। उसको भी अगर आप लोग स्टडी करें, अपने ग्रुप्स बना करके देखें, तो उसको समझ सकते हैं। Yeah, thank you. Thank you so much, sir. So yes, that is actually true. I was looking to some projects outside. Students were demonstrating, and 2 projects out of those actually gained my attention. Some road with black and white color was there. So my question was, why black and white color? In real-time system, it is not like that. So maybe we can try to put forth that exactly real-time scenario in our experimentations and implementation. And of course, we should identify the problems, we should try to solve it. And I always encourage
to keep four things in mind whenever we talk about any problem or any we read about any topic, that when it is identified, by whom it was identified initially, and what it is, and why you are trying to find the solution, and how at the end that will be implemented. So these four questions we should always keep in mind. And of course, with various awareness programs for skill development, we should look for automating the processes where human intervention is involved, so that of course we can enhance human skills for more better things. So my next request is with Professor Nishal Kumar Verma sir, that if you would like to enlighten us with some applications of artificial intelligence in industrial automation, because we are going toward developed India in a rapid rate. So if he would like to put forth some pointers for us here. Thank you, Tina. So yeah, so since the automation, is really an interesting term in industry and even for engineering family. So let me first tell you what is automation. What do we mean by automation? Automation is referring just self-moving, right? If you etymologically we divide this term auto and then metan, auto metan. So this means self-moving, and when it comes to industry, right? So industry, if we look at the industrial scenario, if you go to any industry, you will find that operators are operating machines, right? So when it comes to automation industry, so the first and foremost step is to add some value to the machine. Either it should be AI driven or something like that, or you make it you actually minimize the human intervention to the machine. For example, if you go to any industry, you see operators, they are actually operating the machine to carry out certain tasks, and stepwise, if you first of all, all you need to study the functions of the operator, right? Means what operator is doing, and if you can develop a logic through AI and you embed this to the machine, of course this will be a minimal mimicking of the operator for that intelligence which operator is putting forth to operate the machine. If you can do that, machine can operate by itself and perform the task whatever is desired or required, right? So stepwise, if you keep working on it, right, you can add automation to industrial scenario, right? So this is one of the examples. Another very important example that now industrial environment is working on, and even they are adding to their system, is the predictive maintenance, the condition based monitoring. So what happens in earlier scenario, industrial scenario, when the machine comes into the breakdown, the maintenance staff, first of all, operator has to report to the maintenance staff, and then maintenance staff will go to the machine, attend it. First of all, maintenance staff will find out what is the problem, and many a times you don't have even inventory of that particular part which has gone out of order for the machine.
Nowadays, the big industries, especially the industries which can afford to condition-based monitoring, right? They have developed with the help of AI. Even we are also working on it. We have developed AI system, AI-based, AI-enabled condition-based monitoring for Boeing company, Boeing Aerospace company. And they have successfully installed in their uh, manufacturing unit to successfully manage to get the breakdowns well before the machine actually goes into the breakdown. It is exactly on the same lines as, let's say tomorrow, let's say today we are feeling like, okay, we have been exhausted, or maybe the temperature, we are feeling some temperature or something like that. Some signals keep coming, and we notice and we take care. Either we take rest or we take medicines, and then we can further bring ourselves to the work. And if we are not caring for that, then tomorrow definitely we fell down, and you know um, we are not able to work, and our productivity goes down. Similarly, on the same lines, in industry, the machines are now being monitored with the help of artificial intelligence-based, condition-based monitoring. And you know what is happening in that? The machines, especially big machines, which you cannot afford to go into the breakdown, because see, some of the industries, I mean, depending upon the kind of products that is being, produced, you see, let's say in case of line production, right, where if even a single machine goes into the breakdown, the whole production is stopped. So that means all of the machines have, gone into the breakdown, and you cannot afford. That will hamper the productivity, and productivity is linked to the profit of the industry. So nowadays, most of the industries are employing the use of AI based condition based monitoring in order to judge, in order to manage to get the condition of the machines, so that before they go into the breakdown, they take care. They, either replace the machines, better arrange the inventory of that particular part which is going to go into the breakdown, or whatever actions needed are taken. So this is one thing for the condition-based monitoring of the machine, and which is actually directly linked to the productivity. Another very important aspect of condition-based monitoring industries nowadays is remaining useful life. So nowadays we have gone up to the level where we can manage to gauge the life of the machine, the remaining useful life of the machine. And all these information is really important for better productivity in the machine. So automation is really, achieved in industry nowadays with the help of AI, I'm telling you, and we have developed certain technologies which are successfully delivering in big industries like Boeing and other industries. And they are really, we get the feedback, and they are very happy in order to get the help, the assistance in increasing their productivity. So automation is especially for engineers, right? Because engineers are meant for automation, right? If there is no automation, there is no use of engineers. Because continuously what we are, if you look in the bigger perspective, you see, you will find yourself, you are minimizing the human intervention, right? Everywhere.
whatever is done by the humans, you are always trying to develop some system which actually could be done by machine or something like that. And now AI is helping further in order to increase its efficiency in, in many ways, uh, uh, AI is helping. And one very important point I would like to mention here, as it was touched upon by Professor Mishra. You see, जहाँ काम आवे सुई वहाँ का करे तलवार, राइट? सो ये बिल्कुल ठीक बात है। और आजकल जो हो रहा है, स्टूडेंट्स, आई ऑल्सो फील द सेम, students keep coming, even not only BTech students, even PhD students are coming with the problems which even do not need any intervention of AI. I'm telling you. Because we feel, why AI is needed here? What is the use of AI when unnecessarily you are, complicating the solution? But what they say, no, if there is no AI, people will not appreciate it. How do we claim that we have added something, right? So please don't worry about it. We always look for the easiest solution. Solution should be very simple for the complex problems. So we should look for the simple solutions for the complex problems. Problems, of course, you target which should be a complex, because otherwise simple problems is not exactly a problem, right? Simple problems anybody can do, but the problems can be complex, but the solution has to be simple. Many people who come to us, many students, even otherwise industry people also, they come with problems saying that, sir, you are working in AI and please help us. So sometimes we see the problem and we give them the solution without AI. We say, no, there is no need of AI here. Why are you interested in AI? It's simple, and you can solve this. You can get the solution even without use of the AI. All right. So please don't always look for the assistance of AI. No. You should be first, like proceed in chronological order. I also always educate my students also in the same manner, research students, that okay, first you look at the problems, find out various solutions, right? I mean, various possibilities of the solutions, and then the tools, right, towards that finding that solution, right? So that way we address, we move forward. Now coming to automation, I'll take 30-40 seconds and I'll finish that. So automation actually started in 18th century with the invention of the steam engine, right? So you see, earlier only everything was man powered, right? Anything was man powered. So in 18th century, when the steam powered machines have been developed, right? So the automation started. And then in 19th century, electrical power. So steam powered, then electrical power. And then in 19th century, you see, we have electronics added to it. In 20th century, in 19th and 20th century, electronics came into. And in 21st century, IoT, network enabled. So now we have added network in automation, so that all the digitization, right? So network, we call this industry network enabled manufacturing. So we have data for everything available. So until 2020, this was the top automation strategy industries.
Now, after 2020, you see the help of AI, the association of AI tools into the industry, the industrial problems, solving industrial problems, right? And this is called Industry 5, 5.0, Industry 5.0. Before that, Industry 4.0. We call this as Industry 4.0. I mean, it refers to automation, of course. And what is Industry 1.0 was the start of the automation with steam. So with steam 1.0, with electricity, I mean electric powered machines 2.0. Then electronics gave us 3.0. Then IoT, the network enabled systems 4.0. Addition of AI 5.0. So this is what is the start of the automation to the current level. So with this, I would like to stop here. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you very much, sir, for explaining how industry revolution took place and all the terms. I believe that that's going to be very interesting for our audience. Considering like when we talk about automation, so of course we need to keep in our mind that what is that step-to-step process for that respective problem that we would like to replicate, and that to be done by a computer or any automated machine. And of course then data comes into the picture. So that means the algorithms which are data driven. So, and data is never sufficient. So I would like to request Professor KP Singh sir to enlighten us with some challenges of data-driven algorithms and how various algorithms like transfer learning can be used to deal with such scenarios. So that would be really helpful for us. So please, sir. Thank you. So before responding to answer to this query, I would like to know how many of you, I'm asking to students, have taken the course on AI or machine learning or in deep learning. Just raise your hand. How many of you are aware about AI? Or have you studied any subject in AI or machine learning? Okay. So few are. Let assuming that 50%, am I right? 40-50%, let 40% if I am so. So what Tina asked about the transfer learning are so much algorithms and what we are doing, let it be honest. People say that we are in the fourth in the GDP. Yes? In the GDP we are the fourth, and India is using a lot of AI in a different applications. But at the same time, the crude reality is Indian researchers are contributing in algorithmic design of AI only 1% of the world. Still we are far away from the real world. We all are using chat GPT. We are not creating a chat GPT. We are far away. Still India have to go far miles to be in top AI nations. Okay, we are users. And we are using, but still 1% contribution by research in AI algorithm, not in AI application. I'm saying AI algorithm hardly 1% in the world contribution we are doing, even though we are publishing thousands of papers. In that category, publishing a paper, we are second or in third, but in algorithmic research and novelty, we are in the 1%. So we have to do a lot of work in that category. About the transfer learning and why this transfer learning or this architecture are so powerful, because to develop like chat GPT model, we need electricity or power consumption. You may assume that even that is larger than the power consumption needed in the whole Lucknow city. Okay, so much power consumption to train such a big chat GPT model from the base. What transfer learning and others are able to help us, the model developed by a researcher or team, same parameters,
the tuned and learned parameters we can use on our own data sets which are small enough, and so that with a small desktop or a single GPU we can run our model, and so that we can make some applications part. And so the transfer learning and all these new architectures are in that sense very, very helpful. But still in India mission, now government is saying India is going to make your own LLM. Still we don't have. China have made this DeepSeek, am I right? You are using? Yes. So this DeepSeek has just disturbed the US a lot. Only DeepSeek and OpenAI and all are struggling now. Such a small model is small in the sense reinforcement learning model and able to. So my point is that this transfer learning and all are very, very helpful. Trained model we can train on our local system with a small GPU computing power, and we can build up our models. So for the application purpose, all these algorithms where the transfer learning concept using that or zero sort learning or few sort learning, we can use it, and quick lighter model we can develop for our own applications where we can apply this. Okay. Thank you so much. So I would like to request our audience, if you want to ask some questions from our panelists, so we would be happy to have those. Yes, so I will encourage, because learning, the first important part is ask the question. And if you are not asking the question, you are not learning at all. Either you are too genius or you are not learning anything. You all have the chat GPT who will respond many query, but still if you have a question, definitely you try to ask. Yes, don't hesitate, ask the questions. Don't ask questions only from chat GPT. Please feel free to ask. We would be happy to answer. अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो या तो सब क्लियर है और या फिर सब क्लियर है. Okay, so would you like us to conclude this session? Okay, okay. Thank you so much. Thanks a lot. So chat GPT is responding, or Grok is responding a lot, but still our request, maybe you are hesitant enough, not asking the question. You have to move from this, you can say, lockdown situation. You are not asking the questions. You ask the question not here, even then ask in the classroom. If you will not ask, you are not learning that concept at all. Copycat, okay, everyone is doing. Copy paste, everyone is doing. And chat GPT and all, even schools, children are able to use and write a program better than common person. So ask the question and improve yourself. Yeah, so please keep in mind, it is good to use AI tools, but I would like to put forth a question to our audience, that whether AI will surpass human intelligence. Please think about it. My say on this question is AI can surpass human intelligence with AI itself. So without human intelligence, it won't be able to. So they both should go all together. So that's why you should be curious enough to ask questions, to raise your queries. At the same time, please use AI tools, that is good. But please don't hesitate in interacting with each other. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. The problem is that we are not trying to hesitate. I think, ma'am, these students are capable enough. मैं यही positive aspect के साथ इस चीज को conclude करना चाहूँगा. They must have ample of questions. उनके दिमाग में बहुत सारी questions होंगे, बहुत सारी queries होंगी. But at times they definitely hesitate. And I think it's almost a lunch time. So शायद उधर की तरफ ही switch करना चाहते होंगे. Well, it was pleasure having you with us. And trust me on this, the kind of lecture, the kind of panel discussion जो आज यहाँ पे हुआ, अगर आपने उसको सही से अपने अंदर अपनी life में inculcate किया, then this will definitely help you out in your future engagements. जब आप फ्यूचर में सोचोगे ना कि हाँ वी नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन प्रॉब्लम क्रिएटर,
then definitely आज का session आपको जरूर याद आएगा. Thank you. With this, I would like to invite on stage our respected dignitaries. I would like to invite on stage Mr. Sushil Pandey sir, respected Sumit Vadera sir, respected Praveen Singh sir, respected Kapil sir, to please come up on the stage. Just 1 second. Sir, please. So, Please, everyone. देखिए मैं जब सुबह यहाँ जो सेशन का स्टार्ट हो रहा था, मैंने देखा पूरा हॉल भरा हुआ है, ठीक है. और अभी जब हम देख रहे हैं कम लोग हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जो भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ एआई पैनल टॉक्स सुन रहे हैं. इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप एआई में बहुत इंटरेस्टेड हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं. ये बात सही है, ये बात सही है कि आप हेजिटेट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीख नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल सीख रहे हैं. अब एक क्वेश्चन हमारी तरफ से है, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे आपको, हम बोल रहे हैं, आप सोचिएगा कि हमें एआई कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है. ये आप बिल्कुल अपने आप से क्वेश्चन करिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे. ये मेरा दावा है, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे. ये नहीं पता है लोगों को कि एआई कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है. प्लीज आप इसको देखिए और बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे. एक हिंट दे देता हूं, जब हम किसी सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल हमारे को पता होता है तो हम फिर उसको मॉडल करने की जरूरत नहीं होती. सब कुछ पता है, मैथमेटिकल इक्वेशन इज नोन, उससे बेटर एआई कुछ नहीं करेगा. बट जहां पे हमें सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है कि वो उसका आउटपुट क्या होगा, वो कैसे, sometimes we have complex systems where myriad of physics equations, physics principles are involved, so it's very difficult to get the mathematical equation out of it. तो आप जरूर इसको देखिए. ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहां फिजिक्स लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहां पे एआई लगेगा. तो आप जाइए, देखिए और पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, students. And now I would like to request Dean School of Engineering, Praveen sir, to please present a memento. Sir, please come forward. Sir, please come forward. Let's give a big round of applause. I would like to request Sushil Pandey sir, Dean School of Management, to please present a memento. To Dr. Rakesh Kumar Mishra, sir. It was pleasure having all the dignitaries today. I request Sumit Vadera sir, Dean Architecture, to please present a memento to our esteemed guest. To Dr. Krishna Pratap Singh, sir, IIT Prayagraj. I would like to request Kapil sir, Dean Hotel Management, to please present a memento to our esteemed guest. To Dr. Tina Sharma, ma'am, IIT Guwahati. A big round of applause for our panelists. Thank you so much, ma'am, for being the moderator. So can we have a group photograph, please? Please, can we have a group photograph, everyone? Ma'am, a group photograph. So on the occasion of Akhil Jyot 2025, a special
segment which says Dr. Akhilesh Dasgupta Memorial Lecture was being held on AI, on sustainable development. And I think you students must have been benefited from this lecture. Well, thank you so much to all the esteemed dignitaries and esteemed guests. With this, we come to the end of the session. Meanwhile, there's an information for you all. All the students, you can go and have your lunch, and you need to come back by 1:50. And Thank you. those